Do you ever feel like breaking the rules? Do you ever feel like talking all inside and out? Embrace the messiness of life. Blast out loud, leave your sanity at a door. Let in and let out all that's in your mind. It's a roller coaster ride of views and emotion. Unscripted party while in endless conversation. In a small talk with Coco. I think winning Miss Arunachal is one of the best thing that had happened in my life. As you mentioned that you were very tomboyish, so how the tomboyish girl got into pageantry thing where you need to be a little feminine, huh? It was like I think ek saal ya almost 1.5 years it took me to understand कि I should actually accept the fact that हम जैसा है वैसा है बस. I think you were the first one with the bob cut winning, like literally boy cut था आपका. So I think that picture of someone winning Miss Arunachal with that haircut. So they were kind of disappointed and they were like, अरे Tokmem dung हो गया. Tokmem basically is गलत way में born हो गया, गलत gender में born हो गया करके. So that way my name वहीं पड़ गया था. It was Tokmem. Black Hole presents Small Talk with Coco season 2 and welcome to the another episode of Small Talk. And before I start this episode, I want to tell everyone कि ये जो podcast है, it's going to be a very unfiltered one क्योंकि this is not a planned podcast. And I'll let you meet my guest and we start the conversation soon. Before that, I want to mention that we are recording at Ragi Studio and my hamper partner is Moody Monk and I am wearing a beautiful dress from our sustainable fashion provider Trip Town. And my refreshment partner is Joss Kitchen. So let's meet our guest. Welcome to Small Talk. Thank you so much for having me here. And I must say you are looking gorgeous by the way. Thank you. I think first guest है जो हमको तारीफ कर रहे हैं. You deserve it. You deserve it. Okay, so Tokmem. Yes. So tell us what's going on in your life. As of now, it's like सब ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, like हाँ. And कैसा लग रहा है, like since this is a very unplanned वाला podcast, तो कैसा लग रहा है, like कुछ नहीं actually I was just waiting for your like question जो थोड़ा सा specific होने से शायद I can elaborate more. So yeah, उसी चीज़ के लिए रुका हुआ था. So you can feel free to like ask anything. It's okay. Fine. So first of all, I want to know कि where are you stationed? Like Itanagar या Pasigat, yeah, like because I really had a tough time coordinating with you for this shoot. No, actually I stay here only at Itanagar, but then the thing is like तबीयत बहुत ख़राब था the time when you approached me. I think like मेरा तबीयत ख़राब था. I was like full typhoid होके रह रहा था that time. So I went back to my hometown because my mama was like यहाँ पे कोई नहीं है आपको care करने के लिए, घर वापस आ जाओ. So घर चला गया, फिर वहाँ बैठा. I think like it took me around 1 month out there. पूरा full recovery होने के लिए. उसके बाद again आपका text आया. By that time I again had this plan to like I think 11th को हमारा fix हुआ था. But then the thing is that again I had different ये workshop that was coming up in Bangalore. तो फिर Bangalore जाना पड़ा and then we had to shift it on 15th. Yeah. Okay, so tell us like how the pageantry thing and winning Miss Arunachal has shaped your life so far. Like, okay, I think winning Miss Arunachal is one of the best thing that had happened in my life. I'm extremely thankful to the platform that has been offered to the girls like me. To girls like me, I intend to say कि somebody जो एकदम unfiltered है, एकदम raw है. That is something I really like about you. Thank you. So somebody who is very unfiltered, and then I, to be very honest, like common ground में I'm very like tomboyish kind of a person. So after winning this pageantry, I think kind of like एक responsibility आ गया, and I started understanding कि there are certain ways that I have to look, certain ways that I have to groom myself. And a certain way that I have to carry myself, may it be behavior wise ho या in a character wise ho या intellectually ho या कुछ भी. So that way I think it has shaped me into a very the woman that I am today. Yeah, for sure. So I'm really extremely thankful for the platform. So as you mentioned that you are very tomboyish, so how the tomboyish girl got into pageantry thing where you need to be a little feminine, huh? Okay.
I think first time जब start हुआ, like after my win, I think to be very honest, it was really hard for me. I think उसको adjust करते करते लग गया around साल and all, and तब तक मेरा reigning खत्म हो गया था. So I didn't know how to like carry myself at that point of time. I was trying my best to look as feminine as possible, and I was trying to put on some makeup and be like एक जो categorize करके रखता हुआ है society and all. They think like Beauty standard. हाँ beauty standard हो तो like you have to look a certain way, आपका voice ऐसा होना है, you have to behave a certain way. But it took me a while to understand कि actually it's not about that, you know. It was like I think एक साल या almost 1.5 years it took me to understand कि I should actually accept the fact that हम जैसा है वैसा है, बस इसी चीज़ को लेके I have to just structure myself in a way कि जो मेरे से relate कर पाते हैं, तो they have to be like oh हाँ अच्छा हाँ we can do like that. So now when you see me I accepted the fact कि I'm not extremely feminine, but when you see me you'll understand कि like अच्छा ठीक है, उसका जो dress up है, उसका बोलचाल जो है, उसका approach जो है, उसका presentation जो है, it's not extremely feminine. तो वो पता चलता है कि I accepted the way I am. At the same time हम ये सीख लिया कि इसको form कैसा करना है. Like how should I structure it in a way that I can be more presentable. So I think it gives me a very corporate kind of a look. But then yeah, this is me. I can't change it, right? So yeah. So do you feel like when you were reigning Miss Arunachal, because of your naive nature, like you didn't know ki how to behave in a certain way, did you got like kuch aisa hurdles aaya that you didn't got the project, or maybe like after winning, I think you were the first one with the bob cut winning. Yes, Like I was. literally boycott tha aapka. So I think that picture of someone winning Miss Arunachal with that haircut was one एक hurdle type का ही बोलेगा, like it's like breaking the stereotype ना. Yes, exactly. So after winning also, like did it like something कुछ ऐसा? हाँ मतलब I got your point. हाँ. तो ऐसा था कि like actually हम जब audition दिया था that was like मेरा बाल long नहीं था. But then by the time जब audition ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारा grooming वगैरह शुरू हो गया. At that point I thought कि like नहीं ये मेरा बाल नहीं जम रहा है हमको, like this thing is not suiting me, you know, like कुछ है जो personality को मेरा block कर रहा है. So I asked one of the caretaker वहाँ पे जो होता है, so they were there. I asked her and then I was like I really want to cut my hair, like आप लोग permission दे दे तो I really need to cut it. And उसके वजह से they were like okay ठीक है काट लो, कोई issue नहीं है, बस hair color मत करना. I was like okay cool. तो गया and then that was the best hairstyle that I could think of at that moment of time. तो वो कर लिया. एंड वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरे दिमाग में ये नहीं था कि ओ विद दिस हेयर स्टाइल हम जीतना है, ये करना है, हमको रिकॉर्ड ब्रेक करना है, ये मेरा माइंडसेट नहीं था. द बेस्ट थिंग आई कुड जस्ट फोकस ऑन वाज बेसिकली मेरा जो पर्सनालिटी है, हाउ कुड आई कैरी दैट विद माई हेयर, यू नो. तो बेसिकली मेरा पूरा पर्सनालिटी वॉज एक्चुअली कम्प्लीमेंटिंग माई हेयर स्टाइल एंड माई हेयर स्टाइल वॉज एक्चुअली कम्प्लीमेंटिंग माई होल फीचर्स. सो ऐसा करके आई थिंक इट काइंड ऑफ कम्प्लीमेंटेड एंड एट द सेम टाइम माई परफॉर्मेंस एट दैट पर्टिकुलर नाइट happened that way ki like everybody loved it. So I think it happened just that way, like and yes जीतने के बाद even I was shocked कि like अरे छोटा hair, you know, and somebody who has a really loud voice, मतलब थोड़ा सा dominating voice है मेरा. So ऐसे वाला कोई जीता, it wasn't like वो like pretty girl thingy. तो ऐसा होने के बाद I won't say pretty girl, I would say कि standard beauty standard जो बना के रखा है उसके हिसाब से. Yes. Okay, so like do you remember your last final question? I think it was the question was कि क्या आप religion change करोगे किसी के साथ if you are in love with that particular person and then you are going to marry him. तो would you change it? So my answer basically was no, and I said that actually see the thing is हम लोग जो religion follow up करना चाहते हैं, I don't think so that other person will actually have an object or this what do you say that उसका साथ कुछ complication नहीं होगा to be accepting the person that you love, you know. शायद हम उसके लिए एक्सेप्टिंग होगा कि अच्छा ही फॉलोज दैट काइंड ऑफ रिलीजन एंड आई फॉलो माई काइंड ऑफ रिलीजन, एंड अगर शादी हो जाता है तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग दैट टू कल्चर कैन कंबाइन टुगेदर, यू नो. तो आई थिंक इट्स एक्चुअली अ ब्यूटीफुल थिंग. सो दोनों कल्चर को मेंटेन करते हुए, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लव्स टू बी रूटेड, एंड देन आई एम श्योर बाय द टाइम लाइक अभी जब तक हर जो कोई देख रहा होगा, आई एम श्योर दे नो कि आई एम रियली मच वेरी रूटेड मेरे कल्चर के साथ. सो या दैट्स समथिंग दैट आई वुड नेवर लाइक टू कम्प्रोमाइज इवन माई रिलीजन. So yeah.
Okay, so let's go to the dominating voice. How would you describe yourself as a person? Me as a person, I think it depends on the work that I'm doing. So सबसे पहले तो professionalism is to the extreme. And कभी कभी ऐसा हो जाता है कि in an extreme way इतना extreme हो जाता है कि I forget to have fun in between, you know, work Okay. time जो schedules रहता है. So that's kind of like थोड़ा सा tricky हो सकता है. But if somebody is looking for disciplinary act, तो I think I'm number one for that. And rest, I guess, like morals है. Morals is my one of the core belief that I stand with. So that is there. And I think rest is like it's very obvious जो देखते हैं they'll have their own perspective and all. So this too I think is the main. Okay, for you, like what are the personality or what are the characters in someone that will really turn you off? Okay. I think extremely competitive in a way that it turns out to become really unhealthy. And then trying to like climb on top of somebody and then like acquire that spot of yours. I think it's not good. I have always been somebody who have preached कि competition करो, but in a very healthy way. Let other person know कि चलो ठीक है हम दोनों competition में हैं. Wow, it's a good thing, no? कि like आपको पता है कि अच्छा वो मेरा competition में है. Let's see what kind of मतलब challenge भी करना है चलो खुले आओ. अगर नहीं भी करना है चलो friendship है. Till the time like मतलब इतना friendship होना चाहिए कि वो आपको backup कर सकेगा. आपकी मतलब आप जहाँ पे present ना हो तभी भी. So that kind of thing I think really matters a lot. Okay, and what does your friend circle look like? Like, do you have good friends? Like, how are they? I have amazing friends. It's very small. I can literally like count on my fingers like how many I have. Like I think it's just 3 or 4. But see, the first one you are like looking at him right now, right? He's here, he's supporting me. Like when I'm standing here, आज मेरे कपड़े में कुछ दाग नहीं है, तो I'm sure he's the one who will be like, अरे अरे वहाँ पे गंदा है, चलो साफ करो इसको ना, चलो let me help you out. And there is one lady, she's here only in Bangalore, and then say somebody who will be like, oh अच्छा ठीक है, आपको ये पहनना है, आपको ये पहनना है, I think you should look good, blah 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 blah. मतलब they're always there to back me up, you know, in terms of कुछ भी वो करो. काम वाम होगा या ऐसा कुछ होने से दे आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट एंड क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो बोलता है दैट इज लाइक वेरी अपफ्रंट. तो एंड आई लव बीइंग अपफ्रंट. लाइक जब कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है इट्स नॉट बैड वाला, यू नो, यू डिफ्रेंशिएट इट, राइट? आपको पता चल जाता है कौन सा क्या है. सो वो आपका फ्रेंड से जब आता है तो आई थिंक इट्स मोर ईजियर टू टेक फॉर यू एंड देन उसके ऊपर काम करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है रेदर देन some random people coming and telling you. So it kind of feels like very insulting. तो ऐसा है. तो I think मेरा friend circle I would really rate like एकदम 10. Okay. And what about your family? My family, oh, they are so innocent. I think like I couldn't have seeked for better family. My mom is a farmer, a housemaker, and then my father, he's retired now. He was in horticulture department. And then I have one sister, elder than me, and then other sister who is younger than me. And I have this beautiful niece of mine. I have Jiju, who is an amazing person. Like after my Miss Arunachal ka win jo tha, the whole celebration he organized. And I have my brother out there. He's like मेरा जितना भी बैंक का कुछ काम वगैरह होगा तो आई डोंट नो लाइक यू नो आई लिटरली हमको वो सब नहीं आता है बैंक का काम वगैरह. So he's just a phone call away. Like he's always there to help me out. And everybody is so much rooted in their culture. So yeah, I think that's the main point that keeps me like grounded. Grounded, yes. Yeah. क्योंकि मेरा एक लाइफस्टाइल है जो अभी यहाँ पे है एंड द अदर लाइफस्टाइल दैट द मोमेंट आई गो बैक होम यू वोंट रिकॉग्नाइज मी बेसिकली. आई जस्ट हैव अ पैजामा ऑन एंड देन अ टी शर्ट एंड देन गमछा माथा में बांध लिया एंड चला गया खेत. सो दैट्स मी. Okay. So like I remember I saw your interview where you said like you have like you play a very important role in your family, like you are a male figure, like. Okay. So like you're also an eldest one, na? No, I'm the middle child. Okay, middle child, na? So like when we say like I'm a male figure in the family, like how, like I just want to know your background. You're brought up like
ऐसे like how this character built up, like ये तो character बनने में एक बार नहीं बनते, like from small, like how you grow up, how was your surrounding, that really matters ना. So just can you just tell us about like कैसा था childhood, कैसा था? Okay. Yeah, so when I say that I'm a male figure, it's basically goes back to like way back then, okay? So when mama had me, तो एक इवेंट था कि रात को like mama was like giving birth to me ना, तो उस समय में क्या हुआ कि all the village women they gathered together. So क्या हुआ कि जैसे ही मम्मी जैसे ही आई वॉज बोर्न, आई वॉज टोल्ड दैट वे कि जैसे ही आई वॉज बोर्न देयर वाज दिस लेडी जो क्राई सुना मेरा, द फर्स्ट लाइक बेबी का जो क्राई होता है, दे वर लाइक ओह अच्छा बेटा हुआ है क्योंकि वॉइस लाउड है. हाँ, तो दे वर लाइक अरे बेटा हुआ है, चलो 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 देखने जाते हैं. एंड बाद में जैसे ही देखा इट वाज लाइक गर्ल. एंड वो लोग बोले कि अरे यार तोकमम का है. Tokmem का मतलब जैसे they were expecting a boy child, but then it happened to be a girl child. So they were kind of disappointed and they were like, अरे Tokmem दूंगा हो गया. Tokmem basically is गलत वे में born हो गया, गलत gender में born हो गया करके. So that way my name वहीं पड़ गया था. It was Tokmem. And then my mom, since she was this lady who is typical society वाला जो होता है ना, so she was like, okay ठीक है, since all the ladies and all they are like okay ठीक है ये नाम दे दिया तो I'll keep that. तो she also agreed to it. तो जैसे जैसे बड़ा होता गया I got to like mom and dad they never made me feel कि like ऐसा कुछ हुआ है. But there were few instances जहाँ पे हमको पता चलता था कि you know मम्मी को कोई ऐसा बोला है कि आपका घर में तो बेटा ही नहीं है, सिर्फ 2 बेटी है. And then first incident just दिमाग से हटा दिया. फिर second time again I got to hear from my dad. तब जाके थोड़ा खटका था. एंड आई वाज लाइक अरे यार मतलब घर में कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि बेटी है बेटा नहीं है, बाहर का व्हाई डू दे हैव प्रॉब्लम ना. आई अंडरस्टैंड घर का वंश को आगे ले जाना है एंड ऑल दिस, बट जब किसी के पास नहीं है इट्स नॉट योर वर्क टू कम एंड कीप पोकिंग ना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. That was society does ना. एग्जैक्टली. सो आई थिंक तब हमको थोड़ा सा खटका कि लाइक अरे क्यों इतना इंटरवीन कर रहे करके. एंड उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली मेरा दिमाग में ये बैठ गया कि चलो ठीक है नाउ सिंस इट्स 2 डॉटर एंड माय सिस्टर इज लाइक शी इज लाइक वे फेमिनिन. उसका वॉइस अब लिटरली साइड में बैठ के वो फोन बात कर रहा हूँ यू कैन हियर इट, सो बी लाइक हेलो हाय लाइक दैट. बट देन माइन इज लाइक वी आर लाइक 2 कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज. तो फिर ऐसे होने के बाद आई डोंट नो कैसे करके आई थिंक सबकॉन्शियसली ऑलरेडी मेरे दिमाग में ये बढ़ गया था कि आई हैव टू बी द मैन ऑफ द फैमिली तो एक आ गया खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंदर से. इट वाजंट लाइक बिल्डअप नहीं किया कोई, हमको कोई फोर्स नहीं किया कि यू हैव टू बी दिस पर्सन, बट आई थिंक वो पर्सनैलिटी धीरे धीरे आना शुरू हो गया. सो विद टाइम आई जस्ट नोटिस कि पापा जैसा कुछ कर रहा है. हमारे वहाँ पे नानी का माई मॉम्स मॉम, तो उसके घर पे एक मुर्गी राइट मुर्गी का घर बनाना पड़ता है. तो आप बना सकते हो. So my dad was making, he was alone and nobody was helping him out. So I went and उसके साथ we call it dri. So not dri, sorry, dire. हाँ, तो we call it dire and then that वो चीज़ से बांधना शुरू किया. He needed some help in holding the bamboos. I did that. He wanted to cut that bamboo. एक flat बनाता है ना जैसे कट करके, तो वैसे करना शुरू कर दिया. I don't know how it happened. It just happened. And यहाँ ईटानगर में जैसा देखा लाइक एक बार बहुत ख़राब सा तूफान आया था ना, तो उसमें उसका बॉर्डर जो गिर गया था, ये क्या हालत है बम्बू से बनाने वाला जो बहुत पुराना हो गया था, तो that fell off. तो the time when I realized it, I'm already helping him, digging the ये क्या बोलते हैं उसको, हाँ soil को खोद रहा है and then like वो पिलर लगा रहा है ना. So I think कहीं ना कहीं I started making myself believe कि I'm a male figure in the house. And then शायद मेरा ऐसा होने से शायद सोसाइटी ऐसा कुछ नहीं बोलेगा. So psychologically I think it started affecting me a lot. And now like अभी कैसा है? अभी I think I started accepting the fact कि I'm a daughter. And not necessarily I have to be a male figure. मतलब I can have that presence but not necessarily कि हमको physically वो दिखाना ज़रूरी है. तो that time when when I say कि I was really tomboyish, I think I मतलब उस समय हमको लगा कि हाँ शायद हमको थोड़ा लड़का जैसा दिखने से शायद वो एक्नॉलेज मिलेगा करके. बट नाउ इफ आई लुक बैक आई थिंक
Just that was like So innocent. हाँ exactly, वो इतना innocent था. अभी it's like हम accept कर ले कि I'm a female ना. एक लड़की है and then लड़की have a certain behavior. तो जैसा है वैसे रहो, it's okay. But then you can definitely have a strong impact and strong aura you can have. So that you can build even being a female, you know. So yeah, you don't have to look like a guy for that. So okay, so maintaining male figure for so many years. अभी emotionally कैसा है? Like how are you emotionally? I am extremely emotional person. I'm explosive that way. बहुत जल्दी hurt हो जाता है, बहुत जल्दी. Because I'm a person जो things अगर हम किसी को कुछ share कर रहे हैं, so it's basically I'm filtering myself like 10,000 times मेरे brain में, and then I'm talking something ना. तब हम जाके किसी को information दे रहे हैं. You will see that I'm basically very, very, very private person. So, वही चीज़, I think like I'm extremely private person, calculated, like yeah. it's because you can't share emotion with someone. Yeah, maybe I have problem like seeking help and stuff. Yeah, and I strongly believe that अगर किसी को genuinely मेरा फिक्र है, may it be family, may it be friends, friends के साथ somehow चलो ठीक है. Nowadays I'm starting to work on myself. तो here and there कभी कभी help मांग लेते करके. But I think genuinely अभी कोई care कर रहा होने से they'll automatically come to you and be like, oh, are you okay? क्योंकि बहुत दिन से आपका कुछ updates नहीं आ रहा है. Like I haven't been talking to you, तो I thought कि आपको call करके एक बार बात कर लेगा करके. I think that's enough. And I'm a person, अगर मेरे number किसी के पास है, that means I know that person. अगर मेरा number किसी के पास नहीं है, straight way know कि I don't know that person. And वो भी फिर डिपेंड करता है कि like since like I have two numbers, one is professional, like one is personal. yeah, one is personal, and वो personal number I'm sure वो शायद मैं family के साथ maximum 20 आदमी के साथ ही होगा. That's it. So I'm that kind of private person. Okay. So private person है but public figure है. So how do you maintain the social your social handles? I see like you're not very active ना, but Yeah. see जितने भी like former Miss Arunachal है या फिर reigning है, like they're very active. So what, like how your social medias work? Okay. handles and everything? Understanding that I'm a social figure. सबसे पहले तो I think me kind of don't make myself live in that pedestal कि हाँ you are a social figure, you know, you have to maintain a certain way. नहीं, that I think मेरा में थोड़ा सा mellow down है वो चीज़ जो. And जहाँ तक maintain करने का सवाल है, I think I have very beautifully figured it out कि I understand now कि audience को क्या चाहिए. You got my point? Audience को क्या चाहिए, so that way I put some contents out. And then few contents जो हमको कभी कभी लगता है कि like हाँ ये चल जाएगा, चलने लायक है, तो that I post out. You'll never see me posting my very personal stuff out there. My work, yes definitely, my lifestyle, yes definitely, but उसके beyond क्या हो रहा है, that शायद आपको नहीं दिखेगा. And also when it comes to my social media handle not working in a very like regular basis, that's because हमको कंटेंट ढूंढना बहुत तकलीफ लगता है. इट्स वेरी आई थिंक जस्ट रिसेंटली अभी जस्ट एक हफ्ता पहले ही हुआ है कि रूफ टॉप में जाके आई स्टार्टेड मेकिंग फ्यू डांस वीडियोज एंड ऑल ना. उससे पहले भी करता था, बट दिस वाज लाइक ओके ठीक है चलो करके देख लेता है. बिकॉज आई नो दैट माई सोशल लाइक माई फॉलोअर्स वांट टू सी. I think for some people it come instantly ना, चलो ये करते वो करते, they don't know also कि इसको करना है नहीं करना है. Yes, Just instantly मोबाइल में सब कुछ कर देते हैं. वही. So yeah, that's one thing. And I guess वही है. I just know that okay ठीक है. And yes, definitely one more thing I would like to add कि सोसाइटी या ऑडियंस को जो है वो लोग को एक सर्टेन क्या बोलते हैं उसको, there are certain people that they would love to see social media में, and that person definitely is not me. Oh, because I don't think so. No, I mean, you know, see, when it comes to living in a pageantry world, I think there are people who love to, they started expecting you to have a lifestyle where you are like in a 5-star hotel, you're wearing this glamorous clothes, like, you know, and always looking pretty. So yeah, that kind of standard they have. But now when coming back to me, मेरा practical life वैसा है नहीं. And I started, मतलब I personally believe कि one day when I start feeling that
कि मेरे पास उतना है कि मैं वो चीज़ को, वो लाइफ को कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाऊँ, देन मे बी आई स्टार्ट ऑफ दैट वे. But right now, I think people who follow me, they will definitely continue seeing this type of content only. So yeah. I think you are very rooted, humble. I think not like, I don't think so. So many people can afford the lifestyle they show on their social handle. Exactly. The thing is that कि सब अच्छा चीजें दिखाते हैं, but they don't show all the real things जो कि होता है. And I don't think so. It's about lifestyle. Like in your case, I think आप जो आप बीरा बना रहे हैं उसको भी डालने से चलेगा वो. And अभी वो ट्रेंड चल भी रहा है. Like you don't know this part of me, something like that. Where you first you'll show कि बहुत glamorous है, उसके बाद like कुछ रील्स का कुछ ट्रेंड है ऐसा. Exactly. आई थिंक कोई ट्रेंड के लिए प्रिटेंड कर रहा है, बट आई थिंक इन योर केस वो सच्ची में आई थिंक वो रील्स वो रियल है. ओके, सो चलो थोड़ा मसाला देते हैं अभी. Okay, I'm ready. तो लाइक पहले में जब when you did pageantry, जब you participated, तो उस समय में एक होता था कि लाइक ऑडियंस को आई थिंक अभी भी सबको डाउट होता है फेयरनेस के बारे में, जजिंग अच्छा से हुआ है कि नहीं है. तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस लाइक सिंस यू वॉन? उसको तो नहीं पूछेगा, बट लाइक अभी लाइक यू सी द विनर्स ना, अभी बहुत सारा विनर्स आता है, एवरी ईयर रेनिंग चेंज होते रहता है. सो हाउ डू यू सी देम लाइक जजिंग एंड जो भी वो लोग का प्रोसीजर होता है? कैन यू जस्ट टेल अस वो लोग क्या क्या में मार्किंग देते हैं ना? क्योंकि एज अ लेमन वी डोंट नो, क्योंकि जो वीडियो में आते हैं उतना ही नॉलेज है हम लोग को. सो जस्ट यू आर द पार्ट ना, तो जस्ट टेल अस कि क्या क्या में मार्किंग होता है जब वहाँ पे आप लोग 30 days 40 days रहते हैं ना. Okay. So before I answer that, I'll just say that there are a few protocols that I have to maintain being in this particular industry. But when it comes to students who feel like betrayed, ना कि like अरे यार हम लोग इतना अच्छा से किया था, हमको मार्क्स नहीं दिया. And sometimes judgment का वाला को judges का जो papers वगैरह होता है, definitely there are so many confusions and stuff. But I think see, अभी जस्ट ये एक ग्लास को आप देख लो, राइट? ये ग्लास को आप दिखाई दे रहा है ना, इसका अंदर कुछ पानी है. तो आपको जब ये ग्लास को डिस्क्राइब करो बोलेगा, हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस? I think I've saw this video. Like how would you describe this? Okay, this is a half filled glass, and you had some sip of it. Okay. And वही है. Like I think इसमें गर्म पानी है. Okay, great. Okay. Now, when I see this glass, I see that okay, ठीक है, एक glass है. It's transparent in color, and I see this beautiful dew drops on it. आपको दिख रहा है वो steam का? And yes, definitely half filled है, and yeah, it's a beautiful glass. And I'm sure this glass has been like जहाँ से लेके आया है, it's been selected like बहुत मेहनत के बाद, you know, after looking at so many glasses. So now that's our perspective. अभी okay, that was your perspective. Can you like now imagine it like आप जैसे third person में हैं, okay? तो आप जो इसको देखा वो उसका description, and हम जैसा देखा उसका description. Which one did you find better? I think your was more detailing. Okay. And I just had an layman's point of view. Okay. You had like detailed everything. Okay. So imagine yourself being a judge. ठीक है? Now I'm a judge. तो हम दोनों को judge करने दिया किसी student को. Okay. Now she's walking the ramp, and आप जब उसको देख रहे हो, you have a certain outlook of hers. वो जैसे answer दे रहा है, आपको वो पसंद आया कि नहीं? That is your perspective, right? अभी हम जैसे वो बच्चे को देख रहे हैं, my perspective will be way different than yours. Okay. And possible है कि हम दोनों का same हो सकता है, but आपको लगता है mark same होगा? नहीं होगा. किसी का ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा. So that depends on the judges. So it is impossible to say कि हम perform अच्छा किया था, हमको क्यों judge लोग ये mark नहीं दिया? Because वो student के हिसाब से she did her best. But आपको ये नहीं पता कि कौन सा judge आपको अच्छा लग रहा है. She'll have a different perspective. वो judge आपका different perspective लेके बैठेगा. So that depends on the performance, right? तो you can't mark them saying कि okay ठीक है हमको ये देना चाहिए था. I too did my best. वो गलत हो जाता है. Also coming to the student perspective, it kind of like हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री में है जहाँ पे you have to
be ready for whatever the results are. समझ में आ रहा है ना? Like जैसे आपको एक जजेस कल कुछ पॉइंट बोल दें, यू कैन माइंड इट एंड लाइक पूरा हफ्ता भर आप डिप्रेस में, यस एग्जैक्टली, ईगो में ले लिया, डिप्रेस्ड हो गया, अरे हमको क्यों ऐसा बोला, तो वो आपका बहुत नेगेटिव आउटलुक हो जाता है. एंड एक दूसरा आपको तारीफ किया तो आप इतना हाइप अप हो जाएगा एंड देन यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो भी उसका डिफरेंट आउटलुक दिखाई देता है. सो दिस आर द स्मॉल बेसिक पॉइंट्स दैट जजेस लुक आफ्टर एंड ऑल्सो द लाइक ऑर्गेनाइजर्स, जब आप वो लोग के साथ काम कर रहा होता है ना, तो दे नो कि लाइक ओके ठीक है आपको कौन सा वे में वो लोग देख रहा है. सो यू हैव टू हैव अ ओवरऑल काइंड ऑफ डिसिप्लिन इन यू. सो स्टूडेंट्स अगर वो सोचता है कि ओके ठीक है ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है ना, ऑडियंस ब्लाइंड है, नहीं है, ऑडियंस आर नेवर ब्लाइंड. अगर आपको ज़रूरी है क्या क्राउन मिलना, आपको क्राउन मिलना ज़रूरी है या यू रिक्वायर दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द ऑडियंस जो आपको देख रहा है आपको परफॉर्म करते हुए, दैट मैटर्स अ लॉट ना. तो अमंग मेरा ही एग्जांपल हम ले लेगा, अमंग ऑल द ब्यूटी क्वींस, अगर हम वो स्टैंडर्ड में फिट नहीं होता, डू आई बी डिसअपॉइंटेड अबाउट इट? नो, आई कांट. देयर विल डेफिनेटली बी समबडी हु विल बी रूटिंग अप फॉर मी. हम उसको डिसअपॉइंट करना है क्या? नहीं करना. दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए मैं हमको थोड़ा टाइम तो लगा है फॉर श्योर, बट आई थिंक स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड कि लाइक जजेस जो मार्क देगा जैसे देगा, दैट इज देयर आउटलुक, इट्स फाइन. अगर आपको अच्छा नहीं लगा वो लोग, सेकेंड टाइम ट्राई करो. लाइक तेंगम did ना? Yeah, exactly. She won. That's the whole point. Okay. So it's all about how you take it. आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप क्या परसीव कर रहे हो वो सिचुएशन को लेके. That's the whole point. अगर आप yeah, that's the whole thing. Yeah. Okay, so I hope I made it clear. Yeah, you Okay, made it okay. very clear, very detailing. I Okay. think जो भी देख रहा हो समझ जाएगा. Because I've been seeing this post ना, बहुत सारा पेजेंट होता है, पेजेंट कंपटीशन होता है, उसके बाद people come up and says कि ये मेरा I साथ understand वो हो that. गया, हाँ, like, hurt होता है. हाँ, so we- Because कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग इतना सारा मेहनत कर देते हैं and then that's our first time, लेकिन हम लोग वो जो मेहनत किया शायद उससे थोड़ा अच्छा कोई और था जो जीत गया. समझ में आ रहा है ना? So you can't compare your effort with somebody else. आप अपना जर्नी बस देखो, फोकस करो एंड सी. कभी भी चीज़ जो ना अनफेयर नहीं होता है. अगर आपको एक साइड से रिकॉग्निशन नहीं मिला एंड यू थिंक लाइक यू आर गुड इनफ, देर आर एनी अदर प्लेटफॉर्म्स जो ओपन है. यू डोंट हैव टू हैव द पर्टिकुलर क्राउन की लाइक हमको यही एक्नॉलेजमेंट चाहिए. और अगर है वो एक्नॉलेजमेंट, इट्स गुड थिंग, वर्क फॉर इट ना. देन कंप्लेन ही मत करो. हैव दैट फाइटिंग स्पिरिट, लेकिन विद इन यू. लाइक यू डोंट हैव टू गो एंड टेल पीपल लाइक वो ये सब ड्रामा नहीं चाहिए. यू नो, अगर किसी का जो यू सी लाइक जो आदमी ज़्यादा आगे बढ़ता है ना, दोज आर पीपल जो दिल का अंदर वो बिटरनेस को रखता है एंड देन दे हैव दिस जिल इन देम ना, लाइक वो लोग फाइट करना चाहता है, बट देन दे डोंट शो इट आउटसाइड. दे जस्ट कीप इट विद इन, दे विल वर्क ऑन दैट, लाइक आराम से दे विल वर्क ऑन दैट. very nicely explained. Okay. I'm glad you understood actually. Yeah. Okay, so do you look up to any of the reigning or former Miss Arunachal? Who you feel like, like she really made us all proud? So. Okay. I think my first pageant queen should be Licha Tosu. I loved her. I mean, I saw her this thing. Clock Tower के पास में था गंगा में. It was this big huge poster and I think that was the first time that I saw a beauty pageant queen, like you know, किसी का उस पे. And myself I thought कि like हम तो कभी हो ही नहीं पाएगा, because since I was like this rugged and stuff like that. अभी ही इतना rugged है तो just imagine कि उस समय कितना था होगा, like just बाटा चप्पल पहन लिया and just walking around and all. तो I saw her and I was like wow, ना. And उसके बाद उसका national costume all around देखा. I was like so I think she's somebody that I really like, you know, she inspired me, I can say that for sure. Okay, but अभी तो वो limelight से ही वो हो गया, like. Yeah, but see at some point I think limelight even doesn't matter, to be very honest. I think when you have that peace inside you and then you know that what you're doing is right, and then I'm sure like she's doing some law yes she's law doing कर रहा है. So she know that she is expert in that ना. तो जब उसको पता है कि उसका expertise कहाँ पे है, she doing it, and then अगर वो peace में है वो चीज़ को लेके, I think she is in the right place. And then आप जब तक peace है आपके मन में ना, that's the best part. Okay, so what is your piece? Where is your piece? I think mine, I'm still like figuring something out. I think like I'm near to it. So हाँ पहुँचने वाला, we are like right there. I think this is the right moment where you can
tell us about your new venture. It's going to happen, na? Cool. Yeah. Thank you for the opportunity. See, actually क्या होता है कि हम लोग जब मिस अरुणाचल पार्टिसिपेट करते समय एंड उससे पहले आई ट्राइड मिस लूना एंड उसको भी हम जीता था. I think you also, like, after winning also you mentored so many people, na? Yes, I did. So जैसे ही हम लोग 2019 को आई डिड मिस लूना एंड उसके बाद 2020 को आई डिड मिस अरुणाचल. फिर उसके बाद जैसे थ्रू आउट द प्रोसेस आई जस्ट नोटिस्ड कि देयर इज समथिंग मिसिंग, यू नो, कि लाइक अच्छा मेंटोरिंग का थोड़ा सा कमी है. somebody who comes and then groom you कि like okay ठीक है आप ऐसे ऐसे चलना है. choreography and mentoring, it's two different thing. इसको आदमी लोग समझता नहीं है, like you know, बहुत कम लोग समझते हैं. they still feel like okay ठीक है, आपको mentor के लिए हम लोग हायर कर लिया, चलो आप grooming भी कर लो, choreography भी कर लो. But there is two different section. Mentoring is somebody who will mold you in a way that you look like a beauty pageant girl. ठीक है, that is mentoring. Like you'll mentor her like intellectually भी, उसका कैसे question answer को कैसे क्या करना है, कैसे present करना है, कैसे बोलना है, right? And then choreography is something वो आपका back stage में चलता है. Stage में क्या होगा, कैसे ड्रामा होगा, क्या लेके आएगा आप, how beautiful the sequence is going to be, that is choreography. तो ये चीज़ का हल्का सा हमको कुछ differences नज़र आया. And then I tend to study कि like okay ठीक है, काश अगर हमको इससे थोड़ा सा और ज़्यादा ग्रूमिंग मिलता तो शायद मैं ये कर पाता. And after winning 2020, there were few girls and they were really looking forward to join pageantry. They were aspirants. And then they were like, Ami, we really want to know कि आप कैसे क्या. Then I started realizing कि हाँ यार, वो लोग गाइड करने के लिए है ही नहीं, राइट प्लेटफॉर्म नहीं है. तो I चलो ठीक है, okay, I'll help you out. तो धीरे धीरे it started like helpful way में. या तो उसके बाद I did like वर्कशॉप वगैरह ऑर्गेनाइज किया. आई डिड 3 वर्कशॉप. दैट वाज 3 days फ्री वर्कशॉप फॉर पेजेंट्री एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो या पासीघाट वाज द फर्स्ट स्टेशन, सेकंड वाज रोइंग एंड देन थर्ड वाज ईटानगर. तो इट वाज डन सक्सेसफुली. एंड उसके बाद देयर आफ्टर आई जस्ट टुक अ लिटिल पॉज. फिर लेकिन देखा कि लाइक फ्यू ऑर्गेनाइजेशन दे केम एंड दे अप्रोच्ड मी टेलिंग कि लाइक हाँ आप मेंटोरिंग कर दीजिए करके. So I started doing it. So I think by now total is 8, I guess, yeah. And उसके बाद I even did prelims का, ये Miss Arunachal prelims का, that also I did. And right after that I started thinking कि चलो ठीक है, अगर there are people who know me कि I groom, and then I am willing to groom them, तो ऐसा होने से there should always be a station when I can like where I can actually let them know कि हाँ ठीक है आप लोग यहाँ आइए, so that I can groom you and also maybe I can meet you up ये station पे. तो मेरा just एक ही चीज़ leg behind था, that was station. And by God's grace I started this छोटा सा workspace where I will start very soon. Grooming sessions वगैरह start करेगा. That's called transcend. तो या ट्रांसेंड बेसिकली इम्प्लीफाइज कि मेरे साथ जैसा हम ट्रांसेंड किया ओवर द टाइम, आई एम श्योर माई स्टूडेंट्स हु एवर कम देयर दे विल डेफिनेटली गेट टू ट्रांसेंड विथ मी. एंड ऑब्वियसली वो लोग तो खुद होगा ही होगा. सो आई थिंक वी ऑल विल ग्रो टुगेदर. मी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड इवन बीइंग बेटर ना, कैसे ग्रूम अच्छा से करता है एंड ऑल. तो इट विल बी अ लर्निंग फॉर मी एज वेल, बट एट द सेम टाइम आई एम really happy to let the people know कि I'm willing to actually share what I have in my knowledge about pageantry. तो वो चीज़ के लिए the station is going to be a perfect one. So once again, Transcend is the name, and then I think ये चंदन नगर पे है. तो the location and everything will be like provided definitely in the video. आप लोग देख लीजिए. And then for those aspirants who want to actually participate and be groomed by me, so you guys can come. And yeah, I think like I'll start doing workshop and stuff. I won't be taking classes, but it will be workshop basis. So उसी हिसाब से होगा. I think like 5 days या 6 days का वो होगा. Workshop, only workshop based है ना? Yes, only workshop based. So is there any age? No age, no height criteria, nothing. For those who are interested, who wants to have the feel of कि like अच्छा पेजेंट्री होता कैसा है, but then हम लोग तो इतना शॉर्ट है, हम लोग कैसे करेगा, होता है ना. But then they want to have that feel of it कि like अरे
करने से कैसा होता होगा, आई वांट टू डू वंस, तो वो लोग के लिए भी ओपन रहेगा. ओके, इट्स लाइक Yeah. ग्रूमिंग भी होगा एंड Yes. पर्सनल डेवलपमेंट टाइप का ना. हाँ, personality Personality development. development. हाँ, it comes along with pageantry a lot, because आप आज अगर हमको देख रहे हैं, then the presentation that I have, like मेरे body को लेके या the way I speak and everything. So I think some workshop man. आप प्लीज, आप फ्री है, वेलकम है आप जो. अब आई थिंक लाइक मेरा फर्स्ट बैच में आप ज्वाइन कर लीजिए. आपके लिए पूरा फ्री है. माय फ्रेंड्स ना दोस्त लोग ही होते हैं जो सच बोलते हैं, लाइक दे लिटरली टेल्स मी कि ज़्यादा लीन मत करो, ये मत करो. वो लोग मेरा वीडियो ही देखते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए. अरे नहीं, आई एम श्योर लाइक गुड क्रिटिसिज्म, या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. तो वही है. बट आई थिंक हियर एंड देयर तो होता ही है ना, लाइक स्लाउजिंग एंड एवरीथिंग, वो तो हो गई है. स्लाउजिंग बहुत करते हैं हम ना. हाँ, अभी बोलने का ज़्यादा. इट्स ओके, इट्स जस्ट पॉडकास्ट ना, तो हो जाएगा, चलता है. ओके चलो, अभी हम लोग आई थिंक बहुत बात हो गया. विल प्ले गेम्स अभी, फेवरेट Okay. पार्ट. एंड लास्ट टाइम हम थोड़ा ये ट्राइबल मीटर को स्क्रैच कर दिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ टेंगम थिंग ना, गॉट yeah. वेरी मच ट्रोल एंड बैकलैश. तो फिर भी हम सोचे इस बार विद टॉकमेम आई विल ट्राई. No. चलो, I'll try my Okay, best. here are some like famous Bollywood dialogues that Okay. you have to translate in your dialect. Okay. Okay, we'll try. हाँ, Okay. नहीं होने से हो जाएगा. Okay, the first is the very easy one. मोगेम्बो खुश हुआ. मोगेम्बो खुश हुआ. Like मोगेम्बो को you can give your own dialect का name, like जैसे हम लोग का निशी में आची वची, like ना Okay. पाओ आओ. Okay. मोगेम्बो खुश हुआ. Okay. In a थोड़ा मवाली स्टाइल I'll say. ए मोगेम्बो आसिंगी के दे. That's the best way I could put it. Okay. Okay. We Adi tend to have this क्या बोलते हैं, stretch in the neck. हाँ, but like if they're very happy or like they have a way of expressing, that's the stretch of the neck. Okay. Like that. हाँ. Okay, next. हाँ. दोन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है. You can do one thing ना, दोन की जगह में टॉकमेम लगा सकते हैं. No edit ko mudo kom no tokmem me umlamay. ओह, सुनने अच्छा लग रहा है. सुनने अच्छा तो क्या Okay. फिर से like No edit ko mudo kom. नो अदुक मुदुको, Okay, I'll put more manly style. Okay. No edit ko mudo kom. नो अदुक मुदुको, Tokmem me umlamay. टॉकमेम उमलामाई. Done. इस मजे. Okay. It's nice talk. I have more. No. I think we are done with this. No, I have more. Oh, Okay. this one is very interesting. Don't put me on spotlight now. Okay, देखो इंस्टा भी अच्छे से करता नहीं है. अभी एक टॉक शो में आया, वो हमें तो थोड़ा नीचे ओढ़ने दो. Okay, cool. चलो ठीक है. आज आप ही के दिन है. हाँ. Okay. कुत्ते कमीने, हाँ. मैं तेरा खून पी जाऊंगा. Okay. Kiki bonog iyong buhay ni day. अच्छा सुनने अच्छा. Okay, that's the exact one. हाँ. Kiki bonog iyong buhay niya. आई थिंक तागिया का कान फटने वाला है ये एपिसोड में, All the एडिटिंग में. ऑल द बेस्ट. ओके, लास्ट. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. Okay. एक चुटकी कीमत की सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. सिंदूर को हम क्या ट्रांसलेट सिंदूर करें? सिंदूर ही बोल दो. Okay. निशी में तो हम लोग का ट्राइबल में तो सिंदूर होता ही नहीं है. अंचो न सिंदूर का डोम न केनमा है रमेश बाबू. अच्छा. अच्छा था. Okay. I think like अभी ट्रैवल मूवी में मेरा हायर होने वाला है. और ऑडिशन. हाँ, auditions के लिए. हाँ. That's why you should come to small talk. I hope so कि स्मॉल टॉक के थ्रू मुझे कुछ और काम मिल जाए. Complimentary. हाँ. Okay, आप like do you follow the youngsters जो भी ये जनरेशन में हुआ को Gen Zs? एक गेम है. Okay. ये लाइक Gen Zs लोग आजकल नया वर्ड्स आ गया ना, सिचुएशनशिप क्या. सो इट्स लाइक Gen Z स्लैंग्स जो ये लोग ज़्यादा यूज़ करता है. सो आई आस्क यू कि आप कितना जानते हैं. Okay. लाइक हम भी लेम ही है इसमें. I'm going to sound like a dadima right now. Like literally very old school. वो तो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं बोल के हम थोड़ा लिख के ला लिया. चलो ठीक है, bring और it on. हमको Okay. भी नहीं पता. Okay. So first word is simp. 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 No idea.
SIMP. Simp. Somebody help me. I can only help you here. Somebody Okay, I'll help tell me. you. Okay. Simp is someone who goes above and beyond for someone they like. Okay, that's what. Yeah. Often to an like embarrassing level. अयो ये तो हम किए लग रहे ये बहुत tough हो गया ये. बहुत tough हो गया. Okay. Okay. Okay, ये है इसका मतलब. Good morning to you too. Okay, हाँ. this is like someone जो like पीछा करना ही हो गया. हाँ, Like ऐसे कुछ literally ही to like some extreme or embarrassing. Creepy. हाँ. Creepy. उसमें. Creepy हाँ, अलग है. creepy, Embarrassing. हाँ. Embarrassing. Oh, आपको ठीक है. शर्म ही लग जाए आप ऐसा पीछा किए किसी को. ठीक Okay, है. okay. Next is ये तो बहुत easy है. ये Okay. हमको पता है. Okay. Flex. Show off. Okay. Okay, and vibe check. It's basically like, do you guys connect or not? थोड़ा ऐसा है, but it's Okay. like if someone's mood is good or not. ऐसा vibe check. अच्छा, okay. हाँ, more specific. हाँ. Okay, ठीक है. Okay. Almost there. No cap. No filter on? Yes. I I think that's Tokmem. And ghosted, ये तो easy है. हाँ, ghosted is basically like ignore करना. Yeah, not taking calls. हाँ, हाँ. No? Okay. Cancel culture. ये तो Can you give me a sentence or something? Maybe that will be that will make it more clear. cancel culture like very unprofessional ऐसा type का like Okay, cool. cancel culture is like अरे हम ही गलत बता रहे हैं क्या रुको the practice of withdrawing support for someone or something deemed problematic and offensive. Okay. ठीक है. Now I got it. हाँ. चलो, समझ गया मैं. Okay, यहाँ पे सीखना पड़ेगा Gen Z slang क्योंकि it's important ना. Yeah. Okay, ये तो हमको पता है. FOMO. FOMO, I You heard heard a it, na? song. Yeah, I heard a song about that, but I don't know the meaning. FOMO basically, is it some paranoia or something? It's like थोड़ा सा Like ऐसे ही डर है. या Anxiety, Okay, like yes. FOMO. then I have a correct, FOMO correct. of Yeah, this. yeah, Like yeah. some. Okay. Slay. Slay, mane, you nailed it. Something, like what we say, exciting or हाँ. exceptional. Yes. Yeah. Okay, तो I think ये हम लोग का Gen Z dictionary session था जहाँ पे आप लोग भी सीख सकते हैं if you are not Gen Z. Yes. Okay, I हो गया क्या like कितना हो गया ना time? हाँ, Almost an we hour. talked to. I think I explained a lot actually. हम ज़्यादा खींच दिए क्या? नहीं अच्छा था. Do you have anything to say जाते जाते? Nothing much. I would really like to say thank you for having me here. And also, see, for somebody in an industry, I believe that acknowledgement is something really necessary. And I appreciate you for that. And thank you for having me here. And I think lastly, I'll just say about transcend only. So it's my baby. So basically, yeah. So I would encourage the aspirants who want to come and then be groomed. They can come, and then it's in Chandan Nagar once again. And yeah, I'm looking forward to see you guys and then have a one-on-one chat. And maybe I can help you out with your questions and your doubts on like regarding pageantries and stuff. And also maybe here and there I can give you some tips on how to attain interviews. Like not this interview, as in the job interviews, because there are some times like you need some I certain think, way, no? I think your vision is very clear. Okay. I think transit, best of luck for that. Oh, thank you so much. And देखते हैं. I'll also recommend some people. Oh, that's so sweet of you. I really need that. And best of luck. And thank you so much for coming to my show. Though this was a very unfiltered, unplanned one, because the format was very different. I What I understand. planned for this episode, Yeah, you yeah. know the backstory, what happened. So thank you so much for coming. And we have a hamper for you from my hamper partner, Moody Monk. Oh, that's Please, fun. if you have a time, please go and visit Moody Monk. Okay, It's sure. near National Cinema Hall, Naharlagan. Okay. And if you want to enjoy a really good
cocktails and good ambience, Okay. please, Moody Monk is the one-stop destination. Ooh, okay. So for this sure. is from Moody Monk. Okay. Thank you. Thank you so much. I think this is the first hamper that I've ever received. Really? Thank you so much. Okay, thank you. Thank Small Talk and our hamper partner, Moody Monk. Tolly, if you are watching this. Thank you. Okay, this was it for today's episode. If you like the content, if you like the video, please keep watching Small Talk. We are available on Spotify also. If you are driving in a heavy traffic, you can tune into Spotify, Small Talk. वहाँ पे भी सुन सकते हैं episodes. And this was it. This is Coco. Tata, bye bye. In a small talk with Coco.